कर रहे हैं। तो ये देखिए एम गौतम के सक्सेसफुल और और अब अगली टीम पुडुचेरी में जितनी शांति है उतनी ही अशांति ये फैला देते हैं। विपक्षियों में आ रहे हैं चोला वीरांस। And Chola Veerans in Puducherry, yes, they could not perform to their might. But here at Mysore, they will be putting up a strong show is what they have decided. As the umpires contingent walks in on the mat. And this is once again a fabulous setup here as Aravalli Heroes and Chola Veerans both are the very strong side. Losing to Nilgiri Knights 23-20. Aravalli Heroes now in front of us is Rajendra Bakar, the strong left corner. Ankit Jat on that right corner. Brijbal and also Tausif Ahmed and Navpreet Singh will share the raiding responsibilities, and Prem Bhadu, the captain, will be once again making sure the covers are very, along with Ankit, along with Ayyappan Veerapandiyan, making sure the raiding duties are shared, and Praveen Ayanar and of course the captain Gautam Murugan will be in the covers. Mohit Dul, Inian and Vignesh Babu will be in the substitution lines along with coach Jai Kumar. And as the toss process was gone underway, Sagar Panchal, he says Aravalli Heroes have won the toss and they have selected the court. So the first trade will happen, I think, from maybe Ayyappan Veerapandiyan. We will have to check that out. In the dark purple, as always, is the Aravalli Heroes, and then the Chola Veerans, of course, having their color with the orange mixed in their jersey as well. So very important match, because Aravalli Heroes 23-20, they did not expect to lose against Nilgiri Knights, and that was one definitely for the defending skills of Nilgiri Knights and Rajesh Gujjar. He will probably change a lot of things today. But Jai Kumar, the other coach of Chola Veerans, will be really happy, because last match was a runaway victory, 45-12 for the Kaziranga Rhinos there for Chola Veerans against the Kaziranga Rhinos. So Jai Kumar will be confident, and he will be trying to emulate the same performance against the Aravalli Heroes as well. So let's see what's going to happen as we are all now set for the countdown of this match, and let this give match. Right, so the Aravalli Heroes winning the toss. The first trade will happen from the left to right of our screens as Chola Veerans have sent in, as expected, maybe Ayyappan to start the proceedings off. Right raider will be targeting a lot on that covers as well. You'll have to watch out, especially because Prem Bhadu is right there. But nevertheless, he will not be under that contention as Ankit Dhaya, right, he starts off the proceedings. Goes back with an empty raid, and Harshit, hi Harshit, welcome to the commentary box. जी थैंक यू सो मच नवीन। और बिल्कुल आपने सही कहा था कि आज पौंडीचेरी की तूफान की हम बात करते हैं, चोला वीरांस का तूफान यहाँ पर आ सकता है। और वैसे जो बीजोपाय और तूफान है वो राजस्थान में प्रवेश कर चुका है, और वही राजस्थान की टीम अरावली हेरोज यहाँ पर खेलती हुई नजर आएगी। तो आज देखते हैं कि तूफान किसका यहाँ पर क्रम कर पाएगा। दोनों ही टीमों का डिफेंस बहुत अच्छा है। रणजीत यहाँ पर आपको रेड लगाते हुए नजर आएंगे, लेफ्ट रेडर हैं, अच्छा किया था इन्होंने पिछले मैच में। और देखिए बहुत ही साइलेंट परफॉर्मर है अपनी टीम के लिए। क्या यहाँ पर क्लेम किया है, कोई पॉइंट मिला है, ब्रजपाल को शिकार बनाया है नवीन पहली ही रेड में। And he also targeted one of the major raider, Brijpal Singh, running hand touch. Where was the hand touch, by the way? Left in, and even Rajendra Bakar was shocked, like me. I think it was the toe touch that came in, and Tausif Ahmed, because there is no Brijpal, he has to come in. As we heard what
Rajesh Gurjar was mentioning in the pre-show. He was just making sure Tausif Ahmed will be there as the do-or-die raid expert, but for me, he's much more than that. He is not just a third raider. He can create a lot of confusion in the defense. Tausif Ahmed comes back empty-handed. Only 1 point on the raiding, and that has gone to the Chola Veerans as of now as Ankit Dahiya comes back. जी हाँ, वहाँ पर अंकित दहिया वापस आएंगे अब रेड पर, और तौसीफ के बारे में और चर्चा की जाएगी नवीन, जैसे जैसे मुकाबला आगे की तरफ बढ़ेगा। हमने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इस खिलाड़ी को देखा है, पर यहाँ पर लीजिए अंकित जाट की हम बात करेंगे, फ्रंटल ब्लॉक किया, उसके बाद लग रहा था कि क्या अंकित दहिया जो है वो अपने पैरों से मिड लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, बट अच्छा सपोर्ट आया साथी का, बहुत ही बुलडोज कर देने वाले डिफेंस। He covered the angle very correctly. The anti-dash was in place from Ankit Dahiya, but that right corner Ankit Jat, he made sure the cover and the block was nice. Now Preet Singh, we've seen what he also can do for the Aravalli Heroes prior to this, and wanted to jump over. That's what happened. Rohit Singh right there in front of Navpreet Singh, pins him down. जी हाँ, शिकार बनाते हुए यहाँ पर नवप्रीत का सेकंड रेडर के तौर पर नवप्रीत का यूज किया जा रहा है। जंप लगाना चाहते थे राइट कॉर्नर के ऊपर से, रोहित सिंह ने पहले चेन को छोड़ा, उसके बाद राइट लेग को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस लिया और एक बढ़िया प्रदर्शन। और यहाँ पर एक बहुत ही जाना माना चेहरा अय्यप्पन यहाँ पर रेड लगाने आएंगे, और मुझे अभी भी याद है पौंडीचेरी का वो मैदान था जहाँ पर अय्यप्पन जो थे हमारे साथ लगातार इन्होंने हमारी बहुत सेवा की थी, चाहे फूड सर्व करने से लेकर पूरा प्रॉपर ध्यान रखने तक, पानी से लेकर हर एक सुविधा इन्होंने पहुंचाई थी। और ये इनकी मोटिवेशनल स्टोरी है नवीन, कि इन्होंने लगातार प्रैक्टिस करते चले जा रहे थे उस समय भी, इस समय भी, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जहाँ बैठे बैठे सिर्फ अपनी टीम को मार्गदर्शित करते थे, तालियां बजाते थे, यहाँ पर उन्हें बतौर रेडर खेलने का मौका मिला है अय्यप्पन को। That's very good. He's earned that spot. I just want to know if it's Ayyappan Veerapandiyan or Veerapandiyan. I guess it's Veerapandiyan. Let's see. I think there's some small error, but let's go with Ayyappan as of now. But another empty raid for Aravalli Heroes as that brings in Ranjit Daivaranga. That's an error. Left corner. No, Rajendra Bakar. That is not what you want to see from such an experienced campaigner. 2 point. Chola Veerans. जी हाँ, यहाँ पर गलती हुई है। ब्रजपाल एक बार पुनः वापस बाहर जाएंगे। राजेंद्र बाकर ने फ्रंटल ब्लॉक करने का प्रयास किया था, वो एंगल कट नहीं कर पाए थे, वो मौका दे दिया था कि आसानी के साथ रेडर जो है बच पाए, और उस मौके को पूरी तरह से बुनाया। पर अब तौसीफ की बात कर रहे थे नवीन, तो तौसीफ हमने इन्हें फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग सीजन देखा है। मुझे लगता है कि हमने पहले समर एडिशन में भी इन्हें कहीं ना कहीं देखा था, उसके बाद भी लगातार खेले। इनके पास ये दमखम है कि ऐसा प्रदर्शन ही कर पाए। अभी भी थर्ड रेडर के तौर पर अगर आप इन्हें खिलाएंगे तो आप इनके अनुभव का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। Yeah, he's shown it quite often. There, look at that. Diving hand touch on that left corner. So very good. As Dinesh Chand did not understand what Tausif Ahmed was trying to do. But now Ankit Dahiya, he comes back. And we know what one Dahiya can bring on. Pratik Dahiya. And now again creating confusion in the defense line. What is happening? Aravalli Heroes, they are falling apart and they don't have a plan. 2 point. Chola Veerans. जी हाँ, इस बार अंकित जाट कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। यहाँ पर देखिए, पहले नवप्रीत और अंकित की बात हुई कि शायद हमें जाना है डिफेंस में, पर जब नवप्रीत गए, अंकित वहां पर पीछे बैकफायर कर गए, और इसी के चलते यहाँ पर फिर से परेशानी का सबब बन रहा है। बट चोला वीरन्स एक बार फिर से बहुत अच्छी शुरुआत। तौसीफ अहमद क्या अपने कोच को बता पाएंगे और सभी को बता पाएंगे कि वो है टॉप रेडर की मात्रा रखते हैं? क्या उन्होंने अपने गेम को और इम्प्रोवाइज किया है और अच्छा किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो करना चाहिए था उन्हें। Yeah, you just mentioned a line from the movie Three Idiots, and there are 3 defenders on that court now for the super tackle in Aravalli Heroes, and that's a nice diving ankle hold. Wonderful work from Prem. Brilliant. Prem Bhadu, the captain. 2 point. Super tackle inflicted. That is the first tackle point for Aravalli Heroes. क्या बात है, बहुत अच्छा सुपर टैकल। यहाँ पर देखिए रंजीत थोड़ा ज्यादा अंदर आ गए थे और इनकी पोजीशन पर टच करना चाहते थे, और लेफ्ट कॉर्नर से बहुत अच्छी डाइव लगाई। परफेक्ट फ्रेम को उन्होंने चूज किया, परफेक्ट टाइमिंग को उन्होंने चूज किया, और उसके बाद तो अच्छा सपोर्ट आना ही था। तौसीफ अहमद 17 नंबर जर्सी, क्या खतरा बन पाएंगे? देखते हैं फिर से चोला वीरन्स का डिफेंस। राइट कॉर्नर पर ध्यान दीजिएगा, रोहित थोड़ा सा हाई लाइन वहां पर खेल रहे हैं, एम गौतम राइट कवर खेल रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेफ्ट
कवर पर आपको खिलाड़ी प्रवीण नजर आते हैं। नवीन, प्रवीण ने भी अच्छा इंप्रेसिव प्रदर्शन किया था पौंडीचेरी में। He was also very good. Oh, he's blinded. He's been blinded. The right corner comes across easily and grabs to not. Chola Veerans. Oh, Rohit Singh. That was very easy. See, this is the problem with toss with Harshit. Every time you try and believe that he becomes the lead raider and he commits such error. So that's the reason I think any coach who's there does not have that confidence. See, he was the only raider who was present on the court. And what he should have done, he should have taken that responsibility, gone in for the bonus first. I haven't seen Tausif Ahmed, being very confident in taking a bonus point. Just take the bonus and come back instead of getting blinded like that. So as a coach, how do you get that confidence on Tausif Ahmed if he does that? या बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, और आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। और खासकर जब आपने पिछला ही सुपर टैकल किया हो, सुपर टैकल में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला था वहां पर, बट उसके पश्चात वहां पर ज्यादा अंदर की तरफ, और अंदर नहीं वहां पर मैटर करता है, पूरी ब्लाइंड हो गए थे, बिल्कुल मैट के बीचों बीच वहां पर जाकर खड़े हो गए थे। दोनों ही तरफ की कॉर्नर को मौका मिला, उन्होंने चंगुल को बनाया और फंसाया, बट इस खिलाड़ी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है अय्यप्पन। हालांकि अय्यप्पन को अभी भी अपना पहला पॉइंट मिलना शेष बचा है। 3 का हाउस है, सुपर टैकल का मौका होगा। एक तरफ राजेंद्र भाकर है, दूसरी तरफ प्रेम बादू है, दो बहुत अच्छे डिफेंडर हैं। लीजिए, प्रेम बादू को शिकार बनाया है। कांग्रेचुलेशंस अय्यप्पन, आपका ये पहला पॉइंट इस मुकाबले का। Oh yeah, and also I think he's got 2 points. Let us say, I think it is, Chola Veerans. yeah, Jersey that number is 2 7 and points. 77 Prem Bhadu Wow. and Dev Gurjar, both of them. That was a speedy running hand touch. That was taking off from nowhere there. Substitution, Couple of footwork and then Aravalli off he goes. Ayappan Veerapandiyan and One plus just 2, 3 dashes him points. off. Chola Veerans. And not Aravalli even a Heroes, bonus all from out. just one. First all out for Chola Veerans and Aravalli Heroes. जी हाँ, कम से कम यहाँ बोनस का प्रयास करना चाहिए था जसवंत को, बट एंगल को पूरी तरह से कट कर कर रोहित वहां पर गए, अच्छा ब्लॉक किया पहले, उसके बाद पूरी तरह से डैश वहां पर कर दिया, तो ऑल आउट हो जाएंगे अरावली हेरोज। और अरावली हेरोज की हमेशा से थोड़ी सी परेशानी रही है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर शुमार है, पर जब जब आप पूरा कंबाइंड टीम एफर्ट की बात करते हैं तब तब थोड़ा सा पीछे की तरफ झलकती है ये टीम। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रेम बहादुर की ये होगी बतौर कप्तान कि अपनी पूरी टीम को एकत्रित करके चले। सरप्राइज किया इस बार, लग रहा था रंजीत आएंगे लेफ्ट रेडर, बट राइट रेडर अय्यप्पन आए हैं यहाँ पर रेड लगाने के लिए। That is very well executed, isn't it, from Ayappan Veerapandiyan. He was there, standing there, Ranjit on that left flank, but then the right side was completely blinded by Aravalli Heroes. But that surprise is not converted into a nice gift. Just remains as a small surprise. Should have been converted into a nice gift, as he will be asking to come back. He will be asking to start that raid again. Right, as Navpreet Singh was just stopped in his ranks, as they will take an official timeout as well. And more importantly, see what is the problem with Aravalli Heroes is we've always seen that there are very late bloomers in any series, whether it's the winter edition or the summer edition. They bloom very late. Sometimes I really wonder, they practice together, they stay together, and that does not get converted on the mat. So that means you still are not gelling together, and I don't find that in any other team, especially Aravalli Heroes. Even when Kapil Gurjar and everybody were there, the team got never gelled along together. I mean, there was no coordination, they didn't understand who has to do what. And then Rajendra Bakar and Navpreet Singh are big names. They are huge names, and of course Tausif Ahmed. And everybody have performed well individually. But when it comes to team gelling, I'm not saying they don't gel at all. They do gel, but the time when they they take the time to gel along, the series is half gone, and they don't have that time to come back to play the knockouts or playoffs. That's been a problem with Aravalli Heroes, no matter which that setup is. ये बड़ी जरूरी बात है यहाँ पर कि आप कैसे वहां पर एकत्रित होते हैं, कैसे आप अपने जीत का फॉर्मूला एक साथ बनाते हैं, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा एक टीम के खेलने की आवश्यकता होगी। तो सभी यहाँ पर चाहेंगे कि इस बार अरावली हेरोज को आगे से आगे तक पहुंचाया जाए, और राजेश गुजर साहब ने पहले मैच में कहा भी था कि इस बार ट्रॉफी हम पूरी तरह से उठाने का प्रयास करेंगे, पर कैसे उठाएंगे, बहुत बड़ी जर्नी होने वाली है। और हैशटैग उनका आगे का रास्ता क्या होने वाला है कि उन्हें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा हर एक प्लेयर को एज ए टीम परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाना जाएगा। तारीफ करना होगा यहाँ पर हमारे डायरेक्टर देवा की कि सही समय पर उन्होंने हमें याद दिलाया हैशटैग आगे का रास्ता क्या हो सकता है अरावली हेरोज के लिए। Yeah, I hope Deva was listening to the commentary and then cut to that shot.
I hope he did that. Deva, very good friend of ours. Again. Okay, Deva, we got that. Let's get back to what we were actually trying to say. Okay, now tell me what is the highest level that Aravalli Heroes have reached? Whether it's the winter edition, summer edition. Yeah. So, see, that is the problem. That is you never played a final. I think Hampi Heroes के विरुद्ध उन्होंने रांची में क्या फाइनल खेला था? No, I don't think so. See. राम कुमार उस टाइम शायद टीम में हुआ करते थे रांची में, I think. Yeah, I think, only once in the monsoon edition they were the runners-up. And even there, they had to come back from behind. They had to fight away all the matches. And, they had to win all that matches and then come in to the finals. And see, that is the problem I'm saying. Even with, and Rajendra Bakar has been a very strong man in the Aravalli Heroes lineup every time. And if you just go back and see few of the errors, see, it's 12-4, and the Josh Jazba Junoon with Aravalli Heroes does not come in when it is needed. That is what I was trying to say. And if you go back and look at few of the replays of this match, of how the pointers were being taken from the Chola Veerans' raiders, if you really see what Ayappan Veerapandiyan did, and also Ranjit, when they were raiding in, there was no coordination. It's that big lack of coordination is what I'm trying to highlight here. If we can go back to that replay on our EVS, you will know how the Chola Veerans have not done too much of a damage. It's just that the Aravalli Heroes defense is not gelled along together at all. Prem Badu is very good. As a captain, he's very nice. Generally, any raids that is the Chola Veerans have been done, we can pick up any raid on any raid points. If we can see that will be suggesting us the defense is completely shattered. Not because the raiders are doing very well. It's just because they don't, gel along too much. Is the Aravalli Heroes. Again, probably, I might be wrong here, Arshit, but, I think they have a little bit of an experience that they'll have to let go. Like, say, Rajendra Bakar or Navpreet Singh, they keep playing at higher levels. And look at that! Surprise tackle! I think 1 or 2 points. Lovepreet Singh is saying 2 points. Second. Surprise tackle coming in from Gautam Murugan from the in position. He was in the right in position. Let us say 2 points. गौतम की तरफ से इस बार वहां पर थोड़ा सा हेस्टी टैकल आया, चाहते थे शायद एक और सपोर्ट वहां से मिले, क्या प्रवीण का सपोर्ट वहां पर आया था, क्या एक पॉइंट, क्या दूसरा पॉइंट किसे टच किया गया था वहां पर? I think to find that out, they're going in for the review. And who's asked for it? I think it's Aravalli Heroes. Yeah, they're saying 3 points. No, 3 points. Guys, if you're not very sure, he's looking completely bamboozled. Prem Badu does not know who's there. TV umpire, Aravalli Heroes challenge is 3 points. Our decision 2 points. Please review. Guys, it is just one unsuccessful review per match, and Prem Badu did not know who was out. So he was looking very low on confidence. Right, there you go. As the right cover, Gautam goes in, single-handed attempt on Lovepreet, and a tall raider, Lovepreet, just falls from the back line. So Gautam, yes, definitely a contender to go out, and he also went out, and right, that is not crossed the midline yet. And who comes in? क्या very tricky. दिनेश चंद को टच किया, और उससे पहले क्या जब राइट इनके खिलाड़ी को उन्होंने हैंड टच करने की कोशिश की, वहां कोई टच था, बट एक थोड़ा सा टफ कार्य होने वाला है इन रिप्लेस को देखते हुए, थोड़ा सा टफ कार्य होने वाला है। और नवीन, आपको अंडरटेकर की एंट्री याद है जब वहां पर पूरा स्टेडियम ब्लैक हो जाया करता था और अचानक से वो लाइट चलती थी? बिल्कुल वैसा ही माहौल यहाँ पर मैसूर में बन जाता है जब वहां पर कोई रिव्यू होता है। ब्लैक लाइट्स, मतलब लाइट सब ऑफ हो जाती हैं और थोड़ी सी लाइट से फ्लेयर या ट्रॉफी पर होती है। Yeah, and that gong and that bell that goes gong. Yeah, we should include that also, so that it increases the heartbeat of the TV umpire more. Yeah, nevertheless, let's not pressure our TV umpire. But see, let's go back to that replay again and watch it. I don't think Lovepreet actually touched anybody. It was the defenders going and touching him. Right. Now, Gautam, for sure. Review. I don't see anybody from the right flank. Yeah, 2 points. They have lost the review. I expected this to happen because the captain Prem Badu
was not confident in asking the review at all. So only 2 points. Time out. Chola Veerans. जी हाँ, यहाँ अपना रिव्यू दबाएंगे और अब पूरे मैच में इनके पास कोई रिव्यू नहीं बचेगा। बाकी बचे पूरे मैच में इनकी तरफ कोई भी रिव्यू वहां पर नहीं होगा। अंकित दहिया को पहले टच किया, अब सुनते कोच क्या कह रहे हैं। डिफेंस को टाइट रखो भाई, तुम डिफेंस बहुत ज्यादा लूज तो फिर क्या कर रहा है तू? क्या हो रहा है तेरे? क्या हो रहा है तेरे? नहीं खेले जा रहा और है मेरे पास प्लेयर। The audio is of Rajesh Gurjar. चल कर I think to play on the raid, probably play on the do or die raid. Maybe that might be a good strategy with 6 points in the lead as Ranjit comes back. Now, even if you're playing an empty raid, try and not have a footwork at one end. He tried the bonus, does not get it. यहाँ बोनस का प्रयास किया था रंजीत ने, यहाँ बोनस मिलेगा नहीं। नवप्रीत सिंह पिछली रेड में 2 पॉइंट लेकर आए थे। यहाँ पर देखिए दिनेश चंद एक बार कमिट कर गए थे बट खुशकिस्मत रहे वहां पर, क्योंकि नवप्रीत की निगाहें उनके ऊपर नहीं थी, इसलिए न वो बैकिंग कर पाए न कुछ कर पाए, अन्यथा 1 पॉइंट उनके खाते में जा सकता था। बट अभी देखते हैं 5 का हाउस है। रोहित और दिनेश में एक अच्छा कॉम्बो मिलता है। रोहित ने पहले ही इशारा कर दिया था, रोहित ने पहले ही इशारा कर दिया था कि तैयार रहिएगा दिनेश, और एक बहुत अच्छे डबल था इस पर गए। रोहित के लिए एक और बड़ा अंक इस बार डिफेंस में आता हुआ। And what is more nice is when Rohit commits, he stays committed. Whether the raider is trying to move away his legs or jump over him, Rohit stays committed. It's a very good skill for any corner defender, especially when a raider is running towards you. And now this is a do-or-die raid. Ranjit will be tested. He has the bonus open. He will first try for it. No, Rajendra Bakar scares him away. And then Prem Bhadu cannot block and dash. 17. Couple of points for sure here for Ranjit. Let us say 2 points. Yeah, Chola Veerans. 2 points. Jersey number 7 and 7. एडवांस टैकल, प्रेशर पूरा रंजीत के ऊपर था। यहाँ पर लेफ्ट फ्लैंक की राइट फ्लैंक की तरफ जाना चाहते थे, जैसे ही जा रहे थे हल्के से ब्लाइंड जरूर हुए थे रंजीत, बट उन्होंने चेक किया उनके पीछे कौन आ रहा है, उन्होंने चेक किया, जैसे ही देखा वहां पर प्रेम थे, अच्छी तरह से वो एंटी ब्लॉकिंग स्किल्स का वहां पर यूज किया और मिड लाइन को वहां पर क्रॉस किया। अब इस खिलाड़ी पर जिम्मेदारी है। तौसीफ अहमद बेखौफ खेलने की जरूरत है। कुछ टाइम पहले हम यंग प्लेयर्स की जब बात कर रहे थे और संजीव बालियान साहब और अश्विन कुमार साहब ने कहा था कि इंडियन टीम में भी अधिकतर यंग प्लेयर्स इसलिए आ रहे हैं इस बात को आगे की तरफ लेकर जाए, बट उससे पहले नंबर 14 प्रवीण की तरफ से यहाँ पर एक शानदार डबल था होल्ड नवीन। I think he's just dashed his brains into the thighs there of Tausif Ahmed. That's a strong double thigh hold. I wonder in that left cover instead of Praveen Iyengar, who is there? Praveen Iyengar is very, very good. And I hope he's okay. Hope he's on the mat and not gone back. Yeah, Ayyappan is impressed me. The super tackle situation, he's got good pace. He's stout, short, and he also knows where to escape, from which part of the mat to escape. Yeah, there you see, he's already having an escape route in his mind, which is very, very good for any raider. That time the escape route was not enough. Ankit Jat says, I will grab you like a python and put you down. Number 6. बहुत अच्छी एफर्ट यहाँ पर अंकित जाट की तरफ से। ये एक इंप्रेसिव डिफेंडर मुझे इकलौते नजर आते हैं इस टीम में, अभी तक एक अच्छा कार्य किया इस बार। और अय्यप्पन वो एस्केप रूट ढूंढना चाह रहे थे कि इतने समय में वहां पर अंकित जाट ने अपना बढ़िया प्रदर्शन दर्शाया। जरूर नेकोल्ड के चलते वहां पर ग्रीन कार्ड दर्शाया गया है। अंडर 1 मिनट का खेल जा चुका है। और नवीन, उस बात पर वापस आता हूं जो मैं करने जा रहा था, जब संजीव बालियान साहब और अश्विन कुमार साहब जो युवा कबड्डी सीरीज के प्लेटफॉर्म पर मैसूरू में अभी हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने इन द वेरी स्टार्टिंग यही कहा था कि हम युवा प्लेयर्स पर इसीलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो बेखौफ होते हैं। ये लीजिए आप, दिनेश चंद का एक और बार बेखौफ कर देने वाला, संजोग कर देने वाला प्रदर्शन नजर आया। एंकल होल्ड किया, सोलो टैकल किया, नवप्रीत जैसे रेडर को एक तरफा वहां पर बाहर किया। The problem with Navpreet is he's also taking a lot of time there. See the way he turns away on the time. He's standing there and is not having a strong movement. That's been a problem there. Yeah, youngsters, they don't have any fear for sure, but they also need to put a lot of strategy in place. Yeah. Only being fearless, does not help always. Just a small strategy that also is in the Kabaddi's arena always, and that is really a big ask nowadays. As Ranjit goes back empty-handed, that will be the last trade of the first half. And this is completely dominated by Chola Veerans in the first 15 minutes of this match for sure.
और चलिए यहाँ पर चोला वीरंस और अरावली हेरोज की बात कर लेते हैं। 17 पर पहुंचे चोला वीरंस, अरावली हेरोज 8 पर हैं। 3 रेड पॉइंट्स उनके खाते में है, 9 रेड पॉइंट चोला वीरंस के पक्ष में है। टैकल पॉइंट्स में सिर्फ एक का डिफरेंस है। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आते हैं आप सभी के साथ। स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, खैर मतदान आप सभी का युवा कबड्डी सीरीज के मैच नंबर 8 अरावली हेरोज बनाम चोला वीरांस। और बड़ा ही अद्भुत चला ये मुकाबला अभी तक। दोनों ही टीमों की डिफेंस की हम बात करते हैं। रोहित सिंह ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अमर वर्मा साहब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। बट अगर हम बात करें, रोहित सिंह ने ऑलरेडी अपने शुरुआती समय में 4 टैकल पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं। रेडिंग में रंजीत बहुत अच्छा कर रहे हैं। अय्यप्पन ने 2 पॉइंट प्राप्त किए, अंकित दहिया के खाते में 2 पॉइंट है, दिनेश और प्रवीण के खाते में भी एक डिफेंसिव पॉइंट गया है। वहीं अरावली हेरोज रेड में स्ट्रगल कर रहा है। नवप्रीत के खाते में 2 पॉइंट हैं, सिर्फ 1 पॉइंट तौसीफ अहमद के पक्ष में। ब्रजपाल जो कि मेन रेडर हैं, उन्होंने अभी तक ज्यादा रेज लगाई ही नहीं है। आइए आगे बात करते हैं इस बारे में। नवीन को बुलाते हैं कॉम बॉक्स में। स्वागत है नवीन आपका। Thank you, Harshit. The more important factor is for me, Tausif Ahmed not firing. So please give the opportunities there to Jaswant Yadav because he came in for just 1 raid and he was substituted out. As Aravalli Heroes have won the toss, they will go out there and will have an opportunity to raid first in the second half. So you will have to attack and attack very correctly. Try and get your proper raiders back. That is the big ask now as Brijpal. He comes in. No, this is not what you want. Come on. Brijpal, you're trailing a long mile ago. You just ate on the board. And he does not utilize the first opportunity to raid and get some touch points. See, this is the problem. Where you don't understand where to attack and what to do, as there is a super tackle situation which is on now. And now if they try and go attack Ankit, he might run away with points. और यहाँ देखिए विम्ट नजर आए पिछली बार में ब्रजपाल और अंकित दहिया ने तो सही यहाँ पर कार्य किया। उन्हें ज्यादा अंदर जाने की नीड वहां पर लगी नहीं और उन्होंने वही कार्य किया और ये वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी टीम के पास 9 पॉइंट की लीड है। बट ब्रजपाल अपनी टीम के मेन रेडर हैं। कोच ने साफ साफ कहा वहां पर इंटरव्यू में, और ब्रजपाल से ऐसे कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। उन्हें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट मिले या ना मिले, आपको ट्राई करना चाहिए था और आपने ट्राई किया। देखते हैं क्या पॉइंट मिला है। No, point is not awarded and Aravalli Heroes have no review. Aravalli Heroes have no review. Amar, no, Aravalli Heroes have lost the review. Because I'll tell you what, in the first half, they lost the review for, 2 or 3 pointers. Yeah, only 1 review per match. Review lost. And Gautam, was it? No, it's Praveen Ayanar saying, where did you touch me? We will go back to the replay. Even if there is no review, we will see if Brijpal was telling the fact. After this raid, maybe, as Ranjit Devaranga comes in. No, Aravalli Heroes have lost the review. Switch off the lights. Yeah, super tackle on now. And he should also not try and be very heroic here. He should just try and go back. Because the next raid is a do-or-die raid for Aravalli Heroes and then come back later. Of course, Chola Veerans will have their next raid as do-or-die raid. But yeah, he's coming back. Now, can we go back quickly to that raid where he was claiming a point? This is a do-or-die raid again, Brijpal. जी हाँ, ब्रिजपाल इस बार डू और डाई रेड पर होंगे। पिछली 2 रेड्स उन्होंने एम्प्टी रेड्स की है। खासकर पहली रेड में कोई प्रयास था नहीं, दूसरी रेड में प्रयास जरूर था। इस बार प्रयास करना ही पड़ेगा। बोनस चुराने का प्रयास था, एक अच्छी सोच थी। राइट कॉर्नर के नीचे से बोनस चुराने का प्रयास किया। राइट कॉर्नर ने अटैक करने के लिए गए। रोहित सिंह से इस मुकाबले में पहली गलती हुई है एंकल होल्ड करते हुए, और बोनस क्या मिला है ये भी देखते हैं। Yeah, Jay Kumar is not happy at all. He had no idea to go for the reverse ankle hold. He had no job in doing that. And slowly, this can be a blessing in disguise for Ankit Daya because it's not a super tackle and there's another man who's been revived. That might also be a strategy
from Rohit Singh to give away that 1 point. But Rajendra Bhakkar says no strategy works with me. Diving double ankle hold. The pocket dynamo has blasted for the first time in this match. जी हाँ, फाइनली रूथलेस अटैक जो हमें देखने को मिलता है हमेशा राजेंद्र भाकर से, वो अटैक यहाँ पर देखने को मिला और वो प्रदर्शन, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर इस डिफेंस में नजर आया कि उन्होंने सही समय पर टैकल को इनिशिएट किया। हमने देखा है इस खिलाड़ी को वहाँ पर टॉमी सुधाकर को रोकते हुए, हमने देखा है इस खिलाड़ी को नितिन धनकर को रोकते हुए, तो अभी इन्हें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं चाहिए। बट लीजिए, एम गौतम कह रहे हैं कि मैं मुकाबले में शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे मुकाबले में शांत रहूंगा। शानदार डाइव आई, एंकल होल्ड हुआ और शिकार बनाया। Yeah, I liked what Jai Kumar said to Rohit. Right, because right cover, Gautam, was there in that right corner position. So right cover, right corner does not make any huge bodily differences. And the memory power and the muscle memory will always be the same. And that was once again a strong ankle hold from Gautam, the captain. And now, when Rohit Singh is also back, the defense is once again getting stronger. As Ayyappan Veerapandiyan now once again will try his best, but I'm sure he will come back. Yeah, nothing much to take away from that. They can try to keep doing this, but Chola Veerans, but remember, Prem Badu is just a defender, and the only point, Arshit, if Aravalli Arrows need to come back, they need to get raid points. There's no other way they can win this or even take a lead with defense only. Yeah. रेड पॉइंट्स की आवश्यकता है, रेड पॉइंट्स की आवश्यकता है, बट यहाँ रेड पॉइंट्स दिए जा नहीं रहे चोला वीरन्स को। एक और बार किक लगाई थी रंजीत ने, बट ऐसा लगा था कि राजेंद्र भाकर को पूरी तरह से कवर कर लिया था वहां पर, और राजेंद्र भाकर ने उसके बाद दोनों लेग्स को पकड़ा, अच्छी तरह से इनिशिएट किया और यहाँ पर शिकार बनाया। He just went in completely right into him. He just left the chain out and he did not expect the chain to be given off. 17 out. It's a surprise attack there from Rajendra Bhakkar. Just let the chain go at the right moment. And now, this is what I was trying to say. Bring in the raider, Jaswant Yadav. I was rooting for him. Let's see if he can get a touch point. And that will actually make sure that he might be that extra raider in the side. He just was being seen for one raid in the match. And that's a giveaway point. No, that is not what you wanted. But nevertheless, my rooting of Jaswant Yadav worked off. जी हाँ, यहाँ दिनेश से चूक हुई, यहाँ पर दिनेश से चूक हुई। जसवंत सिर्फ गए थे, थोड़ा सा फुटवर्क करने का प्रयास था, बट नजरें पूरी तरह से दिनेश के ऊपर थी। दिनेश, अगर आप ऐसे एडवांस टैकल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि रेडर की आंखें आप पर नहीं होनी चाहिए, और वहां पर अंडर द आईज उस तरह से एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, जिसके साथ जसवंत ने पॉइंट मिला, और रेड में पॉइंट की आवश्यकता है वो जसवंत ने दिलाया है। अब अय्यप्पन यहाँ पर रेड पर है, 3 के हाउस में हमने इन्हें ज्यादातर रेड लगाते हुए देखा, बट लगातार पॉइंट की हैट्रिक राजेंद्र भाकर की तरफ से। एक और जबरदस्त ताबड़तोड़ एंकल होल्ड, और अब राजेंद्र आ रहे हैं अपने प्राइम फॉर्म में। So important for that pocket dynamo to keep on bursting. Suddenly, once again, leaving the chain at the right moment, and strong ankle hold, and the support staff says, okay, sir, we will actually come in and support you. And suddenly, this is the first time in the second half, or even I think the entire match, where the Chola Veerans have been reduced to 3 men. And this is the super tackle opportunity now. And Gautam will not mind too much. He will let Jaswant Singh go back. Now the tables have turned. 5 raid points, or rather 5 points that's been needed for the Aravalli Arrows. And I was still saying the Raiders need to get points for Aravalli Arrows again and again, Arshit. That is the only way that you can inflict this all out. Because now Chola Veerans are playing in on a do-or-die raid strategy. Let's listen to Jai Kumar. Maybe that's what he'll be saying to them. मौका बहुत आएगा, उसे कैच मारना मतलब जबरदस्ती नहीं करना, वो गलती है तेरे पास, ठीक है ना, कैच है எப்படி அடிக்குமா, அவன் ஃபுல் ட்ரை பண்ணணும், அரே அவன் ட்ரை பண்ண படிணும், ஒரு கேட்ச் இங்க आएगा तेरा मेरा टच मेरा मेरा उन्होंने तोड़ता அவன உள்ள நிக்க சொன்னா தம்பி आप अंदर खड़ा हो जाओ, वो टच में तो पाएगा, टच में देना बेटे, तू वांचा खा लो उनको, तभी तेरे उसको पानी जरूरत है, ಅವನು पानी तेवा, okay ba, okay हाँ, I feel very sad for Jai Kumar. Yeah, you know, translating the same lines both in Hindi and Tamil both. Yeah, unity in diversity. Welcome to India. That's what happens. They're only saying very clearly that if Gautam is attacked, only then Rohit Singh should come for the tackle, or else don't touch him. That is what is very clearly told. And Gautam also tried to explain in whatever Hindi that he can to Rohit. So probably let's see all that Tamil and Hindi combination if it's working out well.
Until now, it's worked out nicely. Last 10 seconds, Lovepreet is not attacked Gautam, and Rohit does not come into attack Lovepreet. Wonderful. Whether it's Tamil or Hindi, it's the language of Kabaddi that we all like. वो कबड्डी की शब्द की बात की जाएगी और यहाँ पर गौतम आए हैं, हालांकि क्योंकि वहाँ पर चोला वीरेंस के लिए तीनों डिफेंडर्स मौजूद हैं। अब नवप्रीत को यहाँ पर जाना पड़ेगा और इस रेड में एफर्ट एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। तो मैं नवप्रीत से चाहता था पिछली रेड में वो एटलीस्ट थोड़ा सा और ट्राई करने का कोशिश करते, पर यहाँ तो उन्हें करना ही पड़ेगा। कैप मिल चुका है, कैप मिल चुका है, पर उसके बावजूद कोई टच अभी तक हुआ नहीं है नवीन। पर यहाँ पर रोहित सिंह को शिकार बनाया, अनसेटल्ड हो गया था डिफेंस पूरी तरह से। Oh my God, that was a wrong move from Gautam Murugan. He went in for the block and the dash, but then Navpreet made sure he had a pause. No, this is not the point. The point is where he paused and turned. We had to look at that replay there. Oh my God, and Rohit Singh was no position for himself to go for the tackle. And look at what has happened. Captain has gone in for a do-or-die raid, jumps over, but jumps in the wrong direction. Rajendra Bhakar, I think he's got his 4 points. And Rajesh Gurjar is happy. Ready now, 1 point. This is the performance जो हम राजेंद्र पाकर की बात करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं। टीम कितना का स्कोर था, वहां से सिर्फ 1 पॉइंट दिया है चोला वीरन्स को और ऑल आउट कर दिया है और अब स्कोर इवन स्टीवंस नजर आ रहा है। नवीन 6.25 मिनट का खेल अभी भी शेष बचा है। And once again, my only worry is Aravalli have come back into the game by only defense. The reason now we have 18 all with just a little bit more than the 6 minutes left in the match. They've come back only with defense. What is Rajesh Gurjar saying? नहीं टूट रहे, इसको भेज, ठीक है? बोनस टेक लेने यार, जा बोनस टेक मार के आजा। Yeah, इधर that has not been even attempted. स्टार्टिंग में झूठा बोनस मार, झूठी ट्रायल है, झूठी ट्रायल में वो जरूर मारेंगे। एडवांस खेल रहे हैं, अब वो आएंगे जरूर। एक बार चलने दे इसको, तू रुक, तेरे को नहीं दे रहे वो, रुक जा। इस पे टूटेंगे, इसके मूवमेंट समझ में नहीं आ रहे, टूट रहे हैं वो इस पे। ओहो, ठीक है नबी, राइट, बोनस की ट्रायल, चलो। They are playing in with the unknown. Right, Brijpal is asked to stop on and Jaswant is asked to go on. Right, and he also wanted Jaswant to fake some bonus points. Right, interesting strategies. Brijpal is asked to hold on. I don't know how long that will work. But yeah, the idea is Jaswant, they don't know much about it. Oh, come on Ankitaya. Rajendra Bhakar was right behind you. बट फाइनली जो राजेंद्र भाकर जिन छोटी छोटी मस्तियों के लिए जाने जाते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस आते ही देखिए। इसीलिए जैसे आपका खेल प्रभावित करने लगता है वैसे ही आप अपना मार्गदर्शन बढ़ा देते हैं। नवप्रीत पर टूटे हैं, जैसा कि कोच ने कहा था कि वो आपके ऊपर टूटेंगे, पर सिर्फ टूटना ही जरूरी नहीं है, एस्केप रूट मिलना जरूरी है। जंप कह रहे थे कोच की, यहाँ पर जंप लगाना था नवप्रीत आपको, बट नवप्रीत कह रहे हैं कि यहाँ मेरी टांग छूटे तो मैं जंप लगाऊं ना। Yeah, too very good for Gautam Murugan, isn't it? Right cover, right outside that block line, and he shouldn't have gone. Of course, jump one option, but then the anti-block and even the turn. No, right raider does not turn towards the right. That has been a problem there. Navneet going down. Ankitaya, he just needs to get something out of that. He cannot get anything under Rajendra Bhakar for sure, because that lion is woken up to the situation with 4 tackle points. Yeah, empty raid again. जी हाँ, पिछली रेड एम्प्टी रेड हुई और अंकित दैया, मैं सोच रहा हूँ कि कब हमें अंकित राणा की याद दिलाएंगे, पर अभी तक वो आराम से प्रदर्शन उनका रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ पर ब्रजपाल गए हैं और मैं इनसे रेड चाहता हूँ क्योंकि इनके पास स्किल्स है। स्वीपिंग टोटल्स यहाँ पर आया, रोहित सिंह को शिकार बनाया। ब्रजपाल ने इस बार कोच को बताया कि चलिए टूटना सिर्फ जरूरी नहीं होता है, आपको अपनी स्किल्स का प्रॉपर यूज करना जरूरी है। और देखिए अच्छा टोटल्स था। 4 tackle points of Rohit Singh, he's just looking very low in confidence. He was just standing there like a dead duck. Does not go for the ankle holds. I wonder what's wrong with Rohit Singh. I think too much of discussion. Maybe he should allow to be played freely. Right, nevertheless, Ranjit now in a do-or-die raid. Chola Veerans, they really need this point. They can't afford another raider going down. The right in defender is right down and the right corner is also right down. No, come on, that's brilliant. That is very brilliant from Ranjit. He faked the bonus and then went in with a hand touch. Jersey number 3 out.
जो अंकित जाट इस बार पहले कमिट किया, उसके बाद वापस पीछे गए, बट रंजीत ने यहाँ पर देखा, जानते थे कि उनकी जो चेस्ट है वो थोड़ी सी आगे आ चुकी है, और उसके बाद वहाँ पर टच किया, हैंड टच किया। 1 पॉइंट की फिर से लीड चोला वीरंस के पास है। 4.25 मिनट का समय शेष बचा है और अरावली हेरोज का लगभग हर मुकाबला बहुत ही ज्यादा डाइंग मोमेंट्स में जा रहा है, और इस बार भी आप यही उम्मीद करते हैं। बट जसवंत आए हैं। पिछली रेड ब्रजपाल ने लगाई थी, ब्रजपाल ने पॉइंट लाया था स्वीपिंग टो टच के चलते, बट फिर से बदलाव हुआ है और इस बार रेडर जसवंत गए हैं जिनका शिकार बनाया गया है। क्या रोहित सिंह ने इस बार कहा कि बहुत हो चुका है इधर उधर, 5वां मेरा टैकल पॉइंट ले लीजिए। That Jaswant, the unknown factor does not work as Rohit comes in with a chain tackle with Ankit. That is wonderfully done. And even in that previous touch point, what Ranjit got in a do-or-die raid, you saw what Ankit Jat was showing to his coach. He was just running off and saying, I was ready for the ankle hold, but the hand came in. So that was the brilliance of Ranjit Daivaranga. He did well on that occasion. And that is why this lead is still with the Chola Veerans. Just imagine that if that do-or-die raid would have gone to Aravalli Heroes' side, that would have been detrimental. Oh, quick raid. Still playing on that do-or-die raid strategy. यही शायद अब रणनीति बन चुकी है अरावली हेरोज के। हालांकि 2.5 मिनट के आसपास का समय शेष है, और बिल्कुल आपने कुछ समय पहले वो बात सही की थी कि अगर अरावली हेरोज मैच जीतेगी तो वो उनके रेडर्स की बदौलत जीतेगी। यहाँ से अगर उन्हें मुकाबला जीतना है तो उनके रेडर्स को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अब रंजीत ज़्यादा अंदर नहीं आएंगे। रंजीत कोशिश करेंगे कि बॉकलाइन के आसपास खेलें। जरूर अगली रेड उनकी भी डू और डाई रेड आ सकती है, बट ब्रजपाल फिर आपको अगली रेड डू और डाई रेड लगानी पड़ेगी। स्कोर बराबर हो जाएगा। ये रणनीति थोड़ी सी बैकफायर कर सकती है। Now do or die raid. Ankit, he does not have too much of a pressure. Yeah, 1 point they will be giving off, but you cannot be very comfortable with under 1.5 minutes after this raid. With just 1 point, Rajendra Parker goes in and gets his high five. That's a brilliant work. Once again, blinded was Ankit on the turn. Aravalli Heroes. जो जैसे उन्होंने अपनी पीठ दिखाई थी, अंकित दहिया ने एक बार अपनी बैक दर्शा दी थी राजेंद्र बाकर को। और कबड्डी में बहुत ही बड़ी स्लैंग है कि अगर आप अपनी बैक दिखा देते हैं डिफेंडर को तो उनके पास बहुत ही एक्स्ट्रा करने का मौका मिल जाता है। बट अब यहाँ पर टाइम आउट के दौरान मांगा गया है, दोनों ही टीमें यहाँ पर वार्तालाप भी करते हुए नजर आएंगे। तो मराना पड़ेगा, क्या इसे कराना भाई, डिपेंड जोड़ते हम लोग तो क्या होगा, इससे करा उसके अंदर उसको डिपेंड जोड़ते हम लोग, समझे बात है। चलो कोई बात नहीं, अभी 1 पॉइंट लीड है, समझे, अभी 1 पॉइंट जबरदस्त कैच मत करो यार, जो आता मार दो। हाँ, और पॉइंट नंबर लीड ऊपर, और पॉइंट नंबर लीड मतलब यार तो कैच मिस बनाएगा। Let's see what Rajesh Gurjar is saying. Right, no discussion out here. That's also sometimes very good, you know, asking the players to decide what they have to do because they know the situation well. Now Preet comes in for a do-or-die raid. He says, don't do that. That is what Jay Kumar said. Don't go for the advanced tackle. And Ranjit Daivaranga does exactly the opposite of what Jay Kumar said. Jersey number 2. Big mistake in the very dying moments of the game. ये बहुत बड़ी मिस्टेक रंजीत जेटे एक्सपीरियंस्ड और वाइस रेडर से, बल्कि रेडरिंग के काम में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बट उसके बावजूद बतौर डिफेंडर उन्होंने यहाँ पर चूक की, गलती की। अब कोई प्रॉपर रेडर उनके पास मौजूद नहीं है। एक अय्यप्पन मौजूद थे बट वो वहाँ पर रेड पे नहीं गए। दिनेश जो कि एक परफेक्ट डिफेंडर हैं, वो यहाँ पर रेड पर जाते हुए नजर आए। लीजिए, प्रेम बादू को गोदी में आ गए थे, लग रहा था एक बार फेक अटेम्प्ट किया, बट प्रेम बादू के चंगुल से बचकर ये बहुत ही बड़ा पॉइंट लेकर आए हैं दिनेश चंद। Turning point of the match for sure. Not easy to escape out from Prem Bhadu. There you go, he slipped out, and I think that was something of a trap from the raider. He allowed Prem Bhadu to come in. I don't think so that was a thought-out trap. If you can go back to that replay again, Rajesh Bakar is whispering a lot of things into the ears of Brijpal, but if you see that raid, he just slipped, and that did not look like he was slipping wantedly. But Prem Badu falling into the trap, and not what you expect from Prem Badu as a very, very good defender. Right, Brijpal, he just needs 1 touch point. He should not be crazy. He should not be very, very heroic. Just try just that 1 touch point to be going in. That is what is needed. Will he? Will he? No, does not get anything. Goes back at the dying moments of that raid.
आई थिंक नवीन कि अब ये मुकाबला चोला वीरंस के पक्ष में जा चुका है, क्योंकि दिनेश चंद आएंगे, पूरे 30 सेकंड यहाँ पर लेना चाहेंगे और उसके बाद एक रेड में 2 पॉइंट यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा अरावली हेरोज को। तो ये क्या गलती करेंगे, क्या बोनस +1 पॉइंट प्राप्त करेंगे? बट उससे पहले यहाँ के सिचुएशन पे बात करते हैं। दिनेश चंद को पॉक लाइन को पार किया है, पूरे 30 सेकंड का उपयोग किया जाएगा। अभी भी ज्यादा से ज्यादा 2 रेड्स हो सकती हैं, एक अरावली लगा सकती है, एक चोला वीरंस लगा सकती है। I think Aravalli Heroes is the deciding raid for them now. If Nafri does not get touch point, to take bonus, that's it. If he does not get a touch point, that's it. Aravalli Heroes are losing this. He has to get a touch point. He should utilize the complete time. Oh, what is this? What has happened? 2 points for sure. You can never call off the Kabaddi match until the 40th or rather the 30th minute. 1 point. Only 1 point. Oh. Aravalli Heroes, jersey number 7 I out. really got 2 points. Rohit Singh, of course, along with Rohit Singh, there was someone else. Bonus not given. And I think it was even Ayyappan Veerapandiyan. Oh my God. Now ये if होता he है। can cross the... Yeah. नवीन, रिव्यू की अहमियत ये होती है, अगर यहाँ पर रिव्यू होता तो जा सकते थे अरावली हेरोज, सही होते या गलत होते ये बात की बात है, बट रिव्यू उनके हाथ में होता। अंकित जाट क्योंकि सिर्फ बॉक लाइन को पार नहीं करना देना चाहते थे। जय कुमार साहब अपनी कुर्सी छोड़ चुके हैं क्योंकि वो जान चुके हैं मुकाबला अब चोला वीरंस के पक्ष में है। सिर्फ 2 पॉइंट से इस मुकाबले को जीता और जो ट्रैप पहले दिनेश चंद ने बिछाया था, प्रेम बहादुर और साथी खिलाड़ी को शिकार बनाया था, उससे मुकाबला पूरी तरह से उनके पक्ष में गया। Chola Veerans. This is the match. Chola Veerans. This is what we really love to see in any game of the Yuva Kabaddi series. And this is what we always want. Even at the end of the 30th minute, you don't know who the winner is. That was very good, but yeah, only 1 review per match. That shows what you can do with it. Ayyappan Veerapandiyan, I'm sure, was touched. But nevertheless, only Rohit ran away, only 1 point given away. You cannot blame anybody here, but apart from yourself. You should be blaming yourself for losing that review out. So very, non-calculative move that was for Aravalli Heroes. They're going down because they did not use the review properly. Yeah. और लगातार यहाँ पर दूसरा मुकाबला हारे हैं अरावली हेरोज। पहला मुकाबले में जीत के साथ शुरुआत की, पिछला मुकाबला हारे, इस मुकाबले में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो ये तो बड़ी हार सर्वाइवल राउंड के पहले ही यहाँ पर क्रम में बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि सर्वाइवल राउंड में बता दें हम सभी को कि पहले, दूसरी और तीसरी टीम को यहाँ पर बोनस अंक मिलेंगे। पहली 2 टीमों को 15 अंक बोनस मिलेंगे और तीसरी टीम को 10 अंक बोनस मिलेंगे, यानी कि पहली 2 टीमों को 7th 8th 9th पोजीशन से मैच खेलने की आवश्यकता नहीं है और तीसरे पायदान पर 8th 9th पोजीशन पर खेलने की आवश्यकता नहीं है। ये इस मुकाबले की हाईलाइट थी सेकंड हाफ की। नवीन, very important of why that is so very necessary to finish at the top of the points table in the first survival round, because that will be a very good advantage when you go into the second survival round as well. Much needed aggression that the teams need to exhibit, but Aravalli Heroes, yes, they came back nicely with only defense. Rajendra Bakar was very good with the hi-fi, but that was the problem again. No raiders stepping up. You can have your defense, but you have lost the battle. You might have won the war, but the battle has been lost by a couple of points because your raiders did not come up to the party, and then you did not utilize the review system very well. Look at that. 10 raid points, 10 defense points. That is the problem with Aravalli Heroes. And on the other hand, 3 points extra. The Raiders of Chola Veerans have actually won the game for themselves. That's a very, very good way to make sure that you register another win in the summer edition for the Chola Veerans. जी हाँ, चोला वीरंस ने लगातार दूसरा मुकाबला जीता, रेड पॉइंट्स भी अच्छी तरह से खाते में आए। ये तो पहले से पता था ना कि डिफेंस ओरिएंटेड मुकाबला खेला जाने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमों का डिफेंस बहुत अच्छा है। बट रेडर्स अरावली एरोज के बहुत पीछे वहां पर रह गए और रंजीत ने बहुत ही अच्छा अपने अनुभव का और बहुत ही इंटेलिजेंस वर्क किया, जिसके चलते इस मुकाबले को जीता और 11 रेड्स लगाई, 6 रेड पॉइंट्स इनके पक्ष में गए। स्ट्राइक रेट लगभग 54 की थी, इसी की आवश्यकता थी। अंत में जाकर इन्होंने कई सारी एम्प्टी रेड्स भी लगाई। बट डिफेंस में देखते हैं कि कौन सा नाम आपको नजर आएगा, क्या राजेंद्र भाकर हो गए या फिर रोहित सिंह होंगे। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना हाई फाई बनाया है, दोनों ही कॉर्नर्स ने बहुत अच्छा किया। बट टैकल्स कम किसने इनिशिएट किए? Yeah, Rajendra Bakar out there, 83% tackle strike rate. Every point came in the second half. The last 15 minutes where he brought the Aravalli Heroes back into the game.
Wonderful work from the pocket dynamo, but that was not enough to put out on the winning points on the board. Right, nevertheless, Chola Veerans once again registering their second victory. And that is really important for Aravalli Heroes now to understand, because the loss to Nilgiri Knights and now here losing to Chola Veerans. Both the matches have been lost because of the Raiders. They have not got that second Raider at all. Forget the third Raider. There was no second Raider at all today. Only now Preet Singh. And apart from that, Brijpal and Jaswant tried their best. Yeah, Tausif Ahmed, a big spot of concern. So that is what they'll have to go back and work. Aravalli Heroes, yes, you can rely on Rajendra Bakar and Ankit Jat. And if the Raiders does not do your job, that's been a big problem. That's been the area of big concern for Aravalli Heroes. Let's see if they can correct that mistake and come back soon in the second match, or rather the next match that they play. But Periyar Panthers will take on Kaziranga Rhinos at 4:15. Sindh Sonics have an opportunity to put out one against the Chambal Challengers. And then at 7:45, the Palani Tuskers, the winners in the morning game against Nilgiri Knights, will have to play another game here against the Kannada guys, Hampi Heroes. So a lot of action still lined up. We'll skip to a short break and come back soon for the post-match presentation of Aravalli Heroes and Chola Veerans. And after that, at 4:15, we will have the Periyar Panthers taking on the Kaziranga Rhinos. I'm Navin Shari alongside with Harshit signing off. Come back soon at 4:15.
Check.